Welcome to this lecture of calculus. In this present lecture, we will study about the partial differentiation. But before taking up the definition of partial differentiation, we will first define what we mean by derivative of a function so that understanding the partial differentiation becomes easy. So we have let y is equal to f of x be a function. Then the derivative of f of x is defined as or first of all, this is denoted by dy by dx, और this is also denoted by f dash of x जो हमने previous lecture में भी किया हुआ है. This is defined as the limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, provided this limit exists. तो इस तरह से हमने डिफाइन किया था डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. अब पार्शियल डिफरेंशिएशन भी एक तरह की डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन की ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे हर जगह पे हमारे पास फंक्शन होती है विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम यहाँ पे x लिया हुआ है एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने y लिया है. फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस ऐसी भी होती है हमारे पास जहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और वहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. तो अब अगर हमारे पास इस तरह की फंक्शन है जहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो वहाँ पे जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वी कैन एट अ टाइम टेक द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद सम वन फिक्स्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं उनको हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं. तो इस तरह की डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू डिफाइन द पार्शियल डिफरेंशिएशन, सबसे पहले हम लेंगे एक फंक्शन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. सो नाउ लेट वी हैव ए फंक्शन z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई. तो बिगिनिंग में हम लेंगे एक फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हम z लेंगे और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेंगे x एंड y. लेटर ऑन हम इसी डेफिनेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और जनरलाइज कर सकते हैं to a function which contains n or more any number of independent variables. Then we can define partial derivative of z with respect to x, partial derivative of the function z which is the function f of x y, and we can define these partial derivatives with respect to x and also with respect to y. तो इस तरह से हम दो पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. अब इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स जो एक है विद रिस्पेक्ट टू x और दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू y, इन दोनों को अब हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे. सो नाउ फर्स्ट वी डिफाइन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z with respect to x is denoted by इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं del z by del x. अब जो हमारे पास फंक्शन है वो हमने लिखी है z इज इक्वल f ऑफ एक्स वाई. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं del f by del x, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f x, नीचे x लिखेंगे सब्सिट्यूट में x1. तो all these notations are used for denoting the partial derivative of this function z is equal f of x y with respect to x. तो del z by del x लिखेंगे या del f by del x लिखेंगे या f underscore x x1 लिखेंगे, and is defined as अब इन तीनों नोटेशन में से हम कोई भी नोटेशन ले सकते हैं. तो हम यहाँ पे लेते हैं del f by del x. Now this is defined as limit delta x tends to 0 f of x plus delta x comma y minus f of xy whole divided by delta x, provided this limit exists. So if this limit exists, now accordingly हम अब डिफाइन कर सकते हैं partial derivative of f with respect to y in the same way. Similarly, जो हम डिफाइन करेंगे del f by del y which is the notation for partial derivative of f with respect to y, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं लिमिट. Now delta y tends to 0 f of x y plus delta y minus f of x y whole divided by delta y. Now again provided this limit exists.
तो अब फिर से इन दोनों डेफिनेशंस पे हम ध्यान देंगे कि इसको हमें समझना किस तरह से है। हमारे पास पहले गिवन फंक्शन थी एफ ऑफ एक्स वाई, जो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, वे फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। अब अगर इस फंक्शन का हमें लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें इस फंक्शन को चेंज करना है इन द एक्स कोऑर्डिनेट ओनली। सो डेल एफ बाई डेल एक्स इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा है हमने, दैट मीन्स हमने सिर्फ एक्स को ऐड किया है, डेल्टा एक्स विच इज स्मॉल इंक्रीमेंट, और वाई को फिक्स रखा है माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे पूरी फंक्शन ही सेम है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। एंड सिमिलरली डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई जो है, इट विल बी द चेंज ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स को फिक्स रखा है, और वाई को चेंज किया है, वाई प्लस डेल्टा वाई से रिप्लेस किया है वाई को, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। Now, if these two limits exist, then we say the partial derivative of f exists with respect to x as well as with respect to y. अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम ऐसे भी दे सकते हैं जहाँ पे partial derivative with respect to x exist तो होगा, लेकिन partial derivative of with respect to y will not exist. And sometimes both of these will not exist, and sometimes both of them will exist. So now we will take up some examples to understand how we have to evaluate these partial derivatives for some fixed examples. So let's take up an example. So this is calculate the first order partial derivatives of the following functions एक फंक्शन हम लेंगे यहाँ पे f of एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से हम सेकेंड फंक्शन लेंगे f of एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस suppose 2x, and we will take up another function like sine of, this is f of x y is equal to sine suppose 2x plus 3y, and similarly we will take up the fourth function as f of xy is equal to like e power 2x plus x square into y। तो इसी तरह से हम और फंक्शंस दे सकते हैं। दिस फोर्थ वन थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाएगा, इस तरह से यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। So we will take the derivative partial differentiation of these four functions with respect to x and y. Now let's take up the solutions of these examples. So in the solution we will take the first part. Here we are given f of xy is equal to x square plus y square. So then first we will evaluate the partial derivative of f with respect to x, which we denote by del f by del x, and now this is defined as limit delta x tends to 0 f of x plus delta x comma y minus f of xy whole divided by delta x. Now we have to evaluate this limit. Now this is equal to limit delta x tends to 0. Now here f of xy is equal to x square plus y square. So f of x plus delta xy will be, we have to replace x by x plus delta x everywhere. So this is equal to x plus delta x whole square, then plus y square minus f of xy, and f of xy is now x square plus y square whole divided by delta x. So this is equal to limit delta x tends to 0. Now we will extend this square, so we will get x square plus 2x delta x, then plus delta x square plus y square minus x square minus y square whole divided by delta x. Now this becomes limit delta x tends to 0. Now this x square and x square will be cancelled, and y square will also be cancelled, and we can also see that this delta x can be taken common, and it will be cancelled with the delta x in the denominator. So we will be left with 2x plus delta x into delta x in the numerator divided by delta x. Now cancel this delta x from the numerator in the denominator. This becomes limit
delta x tends to 0, 2x plus delta x. Now when we let delta x tend to 0, we get answer as 2x. So therefore the partial derivative of x square plus y square with respect to x is 2x. Now we will continue and see what is the partial derivative of f with respect to y. Now this will be defined as limit delta y tends to 0 f of x y plus delta y minus f of x y whole divided by delta y. Now substituting the value of f of x y everywhere, so this becomes limit delta y tends to 0, and here replace x by x as it is, then plus replace y by y plus delta y in the function f of x y, and minus here x square plus y square whole divided by delta y. So this is equal to limit delta y tends to 0. Now again expanding the square y plus delta y whole square, this becomes y square plus 2y delta y plus delta y square, then minus here we have minus x square minus y square whole divided by delta y. Now as we have calculated in the previous part also, when we were evaluating the partial derivative with respect to x, we will here get 2y plus delta y into delta y whole divided by delta y, because this x square and x square gets cancelled, y square cancels with y square, and here we take delta y common. Now cancel this delta y here and then put this delta y equal to 0, we get the answer is 2y. So this also equal to 2y. So this therefore what we have obtained, so we can write down the conclusion here. We have this del f by del x is equal to 2x, and del f by del y is equal to 2y. Now we will leave the remaining parts as exercise. They can be easily solved using the same definition, but now here let's understand how we can find out the partial derivative of a given function without using the definition. So for remaining parts, we leave them as exercise. Okay, now this is the direct rule for finding a partial derivative. अब यहाँ पे हम जो रूल डिफाइन करेंगे, इससे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग इट द वे जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इवैल्यूएट किए ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स. अब हम देखेंगे डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डेफिनेशन. So here we will take up our exercise as find the partial derivatives of previous question without using the function, without using the definition. Now let's see how we can directly evaluate the partial derivatives. So solution. Now del f by del x. Now first we will look at the definition again. The definition for the derivative of f with respect to x is like we only take a change in x and y remains fixed everywhere. So this y behaves like a constant when we are taking the partial derivative of f with respect to x. Similarly, when we are taking partial derivative of f with respect to y, then the change is only in y. So y changes to y plus delta y, and we have delta y here also, and x remains fixed everywhere. So therefore, in defining the partial derivative of f with respect to y, the other independent variable which is x here behaves like a constant. तो हम partial differentiation भी exactly ऐसे ही करेंगे. तो अब हमें यहाँ पे निकालना है del by del x of x square plus y square. अब यहाँ पे हमें partial differentiation करना है with respect to x. We will assume y constant everywhere. अब यहाँ पे x का differentiation हम जानते हैं वो है 2x. अब अगर हम y को assume करते हैं constant, तो constant की differentiation 0 होती है, so we will get plus 0. So therefore this is equal to x. इसी तरह से जब हम निकालेंगे del f by del y, so this will be del by del y of x square plus y square. अब यहाँ पे partial differentiation with respect to y में हमें x को treat करना है as constant और y is a variable. अब constant की differentiation 0 है, so x square की differentiation 0 होगी with respect to y, और y square का differentiation होगा 2y with respect to y, so the final answer is 2y. अब इसी तरह से this was our part A. अब हम बाकी भी इसी तरह से कर सके. Now suppose if we take up the part C.
or we will take a part B. We are given the function f of xy as x square plus, sorry, it is the function is xy plus x square plus 2x. अब यहाँ पे जो हम इवेलुएट करेंगे del f by del x, so we have to take the partial derivative of f with respect to x only, so f is equal to xy plus x square plus 2x. अब यहाँ पे हमें with respect to x डिफरेंशिएशन करना है, that means we will treat y as constant. अब अगर फर्स्ट टर्म में y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ऐसे कॉमन आता है और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, so therefore it's 1. Then plus x square का डिफरेंशिएशन है 2x, then plus 2x का डिफरेंशिएशन है 2, so therefore the answer is y plus 2x plus 2. Now second differentiation of f with respect to y, this is del f by del y of xy plus x square plus 2x. अब जब हमें करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे x एज कांस्टेंट. अब अगर फर्स्ट टर्म में x कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा और y का डिफरेंशिएशन होगा 1. देन प्लस, अब x कांस्टेंट है फिर से यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन इज 0. 2x इज अगेन अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, सो डिफरेंशिएशन इज 0, सो द आंसर इज x. तो इस तरह से हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x में वो मिला y plus 2x plus 2, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मिला just x. Similarly, in the third part, we have f of xy is equal to sin 2x plus 3y. Okay, इसका हम partial derivative करेंगे पहले with respect to x. This will be equal to del by del x of sin 2x plus 3. तो यहाँ पे पहले हमें जस्ट ये ख्याल रखना है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट मींस y को हमें ट्रीट करना है एज कांस्टेंट. तो अब हम सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे जिस तरह से हम करते हैं, बट हमें जहन में रखना है कि y यहाँ पे कांस्टेंट है. तो साइन का पहले डिफरेंशिएशन होता है cos, सो वी विल राइट cos 2x plus 3y. अब उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 3y से, लेकिन y कांस्टेंट है, तो 2x plus 3y का डेरिवेटिव है 2 और 3y का डेरिवेटिव है 0, सो देयरफॉर द आंसर इज twice cos 2x plus 3y. इसी तरह से जब हम करेंगे del f by del y with respect to y, so this will be equal to del by del y of sin 2x plus 3y. अब फिर से यहाँ पे sin का डिफरेंशिएशन है cos, so we will write cos 2x plus 3y, और मल्टीप्लाई करना है इसको डिफरेंशिएशन ऑफ 2x plus 3y से, लेकिन with respect to y. अब with respect to y में हमें x को ट्रीट करना है constant, and the answer is 3 here. So therefore the answer is 3 times cos 2x plus 3y. So this is how we evaluate the partial derivatives of the function with respect to the different independent variables that are involved here. Now we will take one definition here. Definition: continuity of a function of two variables. So अब अगर हमें इस तरह के फंक्शन होगी f of x y, तो हम कब कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और किस तरह से डिफाइन करेंगे कंटिन्यूटी यूजिंग द epsilon-delta definition. हमने epsilon-delta definition यूज किया है to define the continuity of a function for a function of one variable only. But now here we have a function of two variables. Now let's see how do we define the continuity of this function. So we define it like this: a function f of x y is continuous at a point x naught comma y naught if for all epsilon positive there exists delta greater than 0 such that this modulus of f of x y minus f of x naught y naught is less than epsilon whenever this modulus of, whenever we have the modulus like this divided, it is x minus x naught square plus y minus y naught square is less than delta.
So this is the way how we take the epsilon delta definition of a function of two variables. So we say a function f of x y is continuous at some point x naught y naught. If for every epsilon positive there is a delta positive such that f x y minus f x naught y naught is less than epsilon, whenever the distance between the points x y and x naught y naught is less than delta. And we know this from the distance formula. How do we define the distance between the 2 points? अब अगर हम इसी को क्लासिकल वे से डिफाइन करेंगे to define the continuity, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे. So a function z is equal to f of xy is continuous at a point, suppose x naught comma y naught, if these conditions are true. The first condition is f of xy is defined. F of xy is defined at x naught comma y naught. तो पहले डिफाइन होनी चाहिए. The second condition is limit xy tends to 0 comma 0 f of xy exists. तो लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए. दैट मीन्स जो भी हम लिमिट यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं वो एग्जिस्ट होना चाहिए. देन थर्ड वन इज दिस लिमिट xy tends to, sorry, this not x0 but this is actually x naught y naught because we are defining the continuity at x naught y naught. So limit x tends to x naught y naught, and similarly here limit x tends to x naught y naught. This f of x जो पहले एग्जिस्ट होना चाहिए अभी होना चाहिए बराबर x naught y naught. अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होंगी then we will say the function is continuous at x naught y naught. Now here we take one example of a function to be continuous. So the example is like this. Show that this function f of x y, x comma y, which is defined as x plus y into sine 1 divided by x plus y when x comma y is not equal to 0 0, and this is defined to be 0 when x comma y is equal to 0 comma 0, is continuous at 0 comma 0. तो ये है हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स जिसको हम प्रूव करेंगे यूजिंग द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन दैट दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन. सो नाउ इन द सॉल्यूशन व्हाट वी हैव टू शो, पहले हम वही रिपीट करेंगे. सो वी हैव टू शो दिस मॉडुलस ऑफ f of x y minus f of 0 0 is less than epsilon whenever the distance between the point x y and 0 0 is less than delta. So whenever this x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is less than delta. ये चीज हमें दिखाना. So now let's begin. We have like this. We will evaluate what is this f of x y minus f of 0 0. Now first of all this is equal to modulus of f of x y जो है function, it is x plus y into sine 1 divided by x plus y minus f of 0 0 जो है वो is defined to be equal to 0. So this is what we get. Now this is equal to simply modulus of x plus y into sine into 1 divided by x plus y. So this is what we obtain. Now here we know that sine modulus of sine is always less or equal to 1. तो इसको हम कह सकते हैं this is less or equal to modulus of x plus y because mod of sine is always less or equal to 1. But now here we can use the triangle inequality. This is less or equal to modulus of x plus modulus of y plus modulus of y. लेकिन जो ये चीज होता है mod of x plus mod of y, this is always less or equal to 2 times square root of x square plus y square. And this simply follows from the inequality like x square plus when we take the square of x plus y. Now we will treat this to be less than epsilon. If we choose delta is less than epsilon divided by 2.
So then what happens? Then this modulus of f of xy minus f of 0, 0 becomes less than epsilon whenever whenever this square root of x square plus y square is less than delta. तो अब हमने किस तरह से इसको प्रूव किया that this function is continuous. तो पहले हमने इवेलुएट किया f of x y minus f of 0, 0 जो हमें मिला less or equal to y square root of x square plus y square. अब जो यहाँ पे ये क्वांटिटी है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square, इसी को हमने ले लिया, इट इज लेस देन 2 डेल्टा. तो हमने यहाँ पे ले लिया दिस स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square is लेस देन डेल्टा, जहाँ पे हमने डेल्टा को चूज किया लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. तो जब हम यहाँ पे इस डेल्टा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो हमें ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट f of x y minus f of 0, 0 is less than epsilon. So this proves the function f of x y is continuous at 0, 0. So therefore this function f of x y is continuous at 0, 0. So this was an example of a continuous function. Now next we will take one function which is not continuous. So this will be our another example. Show that this f of xy, which is defined as xy divided by x square plus y square, when this xy is not equal to 0, 0 and this is equal to 0, when x, y is equal to 0, 0 is not continuous at 0, 0. We will show this function is not continuous. तो इसको हम किस तरह से solution करेंगे? We will evaluate the limit and we will see the limit does not exist. Now here we are given a function, given f of xy is equal to xy divided by x square plus y square when this xy is not equal to 0, 0. तो हम प्रूव करेंगे एक्चुअली the limit of this function at 0, 0 is not equal to f of 0, 0 जो f of 0, 0 0 के बराबर है. तो हम किस तरह से वो करेंगे? So we will choose a path y is equal to mx. Then what happens with the limit? Then this limit xy tending to 0, 0 f of xy. Now let's see what this limit becomes. This becomes limit xy tends to 0, 0. Now f of xy is equal to xy divided by x square plus y square. अब यहाँ पे हमने जो पाथ लिया है along which we are evaluating this limit, the path is y equal to mx. यानी हम इस पूरे लिमिट में y equal to mx सब्स्टिट्यूट करेंगे. So what do we get? Now limit. अब हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है y को mx से. So therefore wherever we have y, we will replace it by mx. अब इस पूरे लिमिट में सिर्फ x ही रहेगा. So we will only get x tends to. अब जब यहाँ पे x y equal to 0 है, so x will also remain to be equal to 0. So therefore we will get limit x tends to 0. अब यहाँ पे x है, y की जगह पे हमें mx लिखना है. So this x into mx divided by x square plus m square x square. So therefore this is equal to limit x tends to 0 mx square divided by x square plus m square x square, जो इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है. Now this is equal to limit x tends to 0. अब यहाँ पे x square every y cancel हो जाएगा and we will be left with m divided by 1 plus m square. Now when we let x tend to 0, we will get an answer as m divided by 1 plus m square. So therefore we obtained the limit of this f of xy at 0, 0 as m divided by 1 plus m square. और ये m था, हमने एक पाथ चूज किया था y equal to mx. अब यहाँ से हम आराम से समझ सकते हैं, अगर हम m equal to 0 चूज करेंगे, we will get the limit as 0. अगर m equal to 1 चूज करेंगे, यानी हम पाथ लेंगे y equal to x, तो हमें आंसर आएगा 1 divided by 1 plus 1 यानी 1 by 2. अगर हम पाथ लेंगे y equal to 2x, तो हमें आंसर आएगा 2 divided by 1 plus 2 square यानी 2 by 5. तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे m चेंज करेंगे, यानी अगर हम पाथ चेंज करेंगे, तो हमें यहाँ पे लिमिट का आंसर भी डिफरेंट आएगा. तो इस तरह से अराउंड डिफरेंट पाथ्स वी विल हैव अ डिफरेंट लिमिट फॉर दिस फंक्शन एट 0, 0.
तो अब अगर एक फंक्शन का डिफरेंट लिमिट आएगा along the different paths, we will say that function is not continuous. So here we will say this limit depends on m. So which depends on m. Therefore, the function is not continuous. Thus, the function is not continuous at 0, 0. So this was how we prove the continuity and how we showed that the function is not continuous at some point. Now here we will take two exercises that we can try yourselves. The first function is f of x, y, which is defined as x square plus y square divided by mod of x plus mod of y. Then x comma y is not equal to 0, 0, and this is equal to 0. Then xy is equal to 0, 0. So prove that this is continuous function. तो यहाँ पे आप प्रूव करेंगे ये कंटिन्यूस है. And second function, suppose let's name this as g of xy, which is now defined as xy, or we will take it as divided by xy plus y square. Then x comma y is not equal to 0, 0, and suppose this is equal to 0, then xy is equal to 0, 0. This function is not continuous at 0, 0. तो इस तरह से यहाँ पे आपको पहली पार्ट ए में प्रूव करना है दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड पार्ट बी में प्रूव करना है दिस इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन.